organized by Skill Discovery. Skill Discovery is a platform where we all learners are connected to the experts globally. I request all the participants to mute themselves. So Skill Discovery provides us a platform where we can connect with the expertise from all over the globe. So post-COVID, the classrooms are not limited to our homes. Classrooms are not limited to our local area. We can connect to anyone globally. So Skill Discovery is a platform which provides us with such kind of experts. The topic for today is data analytics. Data analytics is a science of analyzing the data to make meaningful conclusions out of it. In our daily life, we gather so much of data in Excel, but there is no point of collecting the data at one place till the time we can extract information out of it, till the time we can use this information to take meaningful decisions. So with the help of data analytics, we can do all these things. With the help of data analytics, the businesses can improve upon their performance. They can work more effectively and efficiently. And to explore more on this topic, we have an expert with us, Mr. Manoj Chakravarti. Manoj sir has a wide range of expertise in renowned industries. Manoj sir is an IT professional who has given lot many trainings to the industries as well as to the students. His major areas of expertise are MS Excel, FoxPro, SAP, ERP, MIS, and networking. So without taking much of your time, I'll hand over to Manoj sir. Thank you, Nidhi. Thank you. Thank you, sir. Good evening, friends. So today we are meeting first time on this topic, that is data analytics. And prior to this, I have already delivered one session on the same topic, but not in India. It is out of India, that is Dubai. There was a company in Muscat. For them, I have delivered the same session. And at that time, there were 196 participants who has attended this session. And today we are having 66. Probably it may touch 100 in next 10-15 minutes. So before we start, I would like to heartily welcome all of you to joining this session on time. And thanks for your patience for 10 minutes, which you keep on listening the music. Okay. So before I start, let me share my screen. I'll share my screen. Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Okay. This is my small introduction. What I would like to share with you is myself, Manoj P Chakerwarti. By qualification, I am M.Sc. M.Phil with applied mathematics, MBA, PDEXIM, PGDBA, DCS, PMP with 40 PDUs. And having 33 years of working experience in engineering and manufacturing companies, IT companies. And since June 20, after my retirement, I started my own IT consultancy, that too just on Microsoft Excel. The reason behind that is, I know it's a very big area where maximum people doesn't know Excel. And that is the only point why I have entered into this, to share my knowledge, what all I am having, and I will deliver what all maximum I will deliver in my trainings. As this is just 1 hour webinar, so it might be possible कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, या कुछ चीजें ऐसे लगेंगी कि क्या बोल रहे हैं सर. Don't worry, everything is put it into a very simpler form, and at the end of the session, what I am going to display, that will be the summarized form of what all you will learn during the 1 hour session.
So only 60 minutes we have, and in that I have to show you the trailer of entire Excel as well as the data analytics. Initial few slides are theoretical, but with practical examples. And finally, I will show you what all you can get it from that, and beyond, sky is the limit. Excel is an ocean. Nobody can say, I know full Excel. But yes, you should know what you want and make yourself different than others. As on date, my LinkedIn followers are 17,500 plus. Sir, can you please? Hello? Hello? Yes, somebody was asking something. Okay. So, as on date, my LinkedIn followers 17,500 plus, and it was just 487 when I started my business. So, you can see the vertical growth of my followers. The reason behind that is what I deliver from bottom of my heart. Okay, कुछ भी मैं छुपाऊंगा नहीं और कुछ भी ऐसा नहीं रखूंगा जो मेरे पास रहे. I will share what all I have, and you also feel like that we are friendly sitting across the screen, not physically but virtually. Okay. Now, training on data analytics will start. So, topic is today's data analytics. Before we start with data analytics topic, we should know what is data and what is analytics. Okay. If you don't know this thing, then how we can start with the subject matter? So let's see. What is data? Data is a raw form of knowledge and on its own doesn't carry any significance or purpose. Say for example, if I say pencil, only pencil, what you will do? Nothing. If you say paper, then pencil and paper, then comes the eraser, then third data has come. Okay, so that way every data has its own significance, but if it is collectively seen, then gives you some input. Data can come in the form of text, observations, figures, images, numbers, graphs, or symbols. Anything in any form, you can collect your data. Data collection is the major part of any growth, whether it's the personal life, professional life, education, your studies, whosoever may be. Without data, you cannot grow. Data is facts and statistics collected together for reference or analysis. At the end, we are going to analyze that data. Now, the next point comes is analytics. What does analytics mean? Analytics is the process of transforming data into insights to improve business decisions. If you don't do any analytics, what will happen? Data will remain data. Then what is the use of collecting the data? Next is, now what is data analytics? What do you mean by data analytics? हमने एक डेटा देख लिया, एक एनालिटिक्स देख लिया. Now डेटा एनालिटिक्स पूरा क्या है? Data analytics converts your raw data into actionable insights. It includes a range of tools, technologies, processes used to find trends and solve problems by using data. अब सिर्फ डेटा होने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल में ही आप प्रोसेस कर सकते हो. There are many ways to use your input and do the processing. But finally, what I would like to share with you, as you all are graduates, postgraduates, professionals, or school students, whoever may be attending the session, one thing we all have learned, that is BODMAS rule. Okay, what is that BODMAS rule? Brackets, ठीक है, जो innermost bracket होता है सबसे पहले execute होता है. Then within that bracket, what multiplication? Exponentiation, multiplication and division, addition and subtraction. ये सारा का सारा सॉल्व होता है तो आपका कोई इक्वेशन का सब जाके आपके कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है. Okay, so what is that? That is the BODMAS rule. So that is the base. That is the base of any calculation. What all language
tool, software, what all you are using, at the end you are working with arithmetic operators, bracket, and your and then or conditions. So कुछ भी आप कर रहे हो, आपका ये बेस अगर तैयार है, then only you can proceed further. If the foundation and fundamentals are not clear, what will happen? You will build a building but has no base. So always keep it in mind what all tools and technologies you are using, what all you are learning, learn right from scratch and right from bottom. कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन पहले खोदी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, और वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर आप उसकी स्टोरीज बनाते हो. So that way you should have pure and conceptually clear everything. Now why data analytics is important? Data analytics करना है तो क्यों करना है? उसकी importance क्या है? Data analytics is important to understand trends and patterns from the massive amount of data that are being collected. कोई भी डेटा लिया है, चाहे वो हमारा पर्सनल है, प्रोफेशनल है, या हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का है, कोई भी डेटा है, उसके ऊपर कुछ हमको एनालाइज करना है, वो पूरा डेटा कलेक्शन के ऊपर ही होगा. Now, the point comes is data collection. How to collect data? There are number of ways to collect data. Data आ जाने के बाद what we do? Do we just directly process them? No, it is not like that. The very pure thing is you should collect the pure data. If the data is received by you by any certain number of resources, you have to make them clear. How to make them clear? In that, there is a part in data validation of Excel. Data validation आपके Excel की sheet पर होगा. Your sheet will not allow any wrong data to be entered into your Excel sheet. Now, right now, if I am talking about Excel sheet, it doesn't mean it is only implemented or applicable on Excel. If you are using any software or any program, or you have developed your own program, in that also, validation part remains same. The validation part means data cleaning. How to clean the data and how to allow the correct data to be entered into your system. System doesn't mean Excel. System doesn't mean SAP. System doesn't mean any ERP. System means the way you are collecting the data should be pure. And for that, you need to put number of constraints on the data entry. It helps you to optimize business performance. Okay. When it will help you in business performance? When the data is good in quality, not should be in quantity, it should be qualitative data. Forecast future results. The more data you have, the best forecast you can do from that. If the forecasting is to be done, you should have some data. You cannot say 2 महीने का डेटा है, उसके ऊपर से मैं एवरेज आउट करके बोल दूं कि मेरा इस साल का इतना प्रोडक्शन हो जाएगा. नो, you have to see everything into picture. Every constraints will come across during the year. If the data you have more in number, your forecasting will be more accurate. Understand audience, what your opponent, the end user, expects from you. That clarity you should have. Then only you can do the proper data analysis on their requirement. Make better business decisions and reduce cost. When the decisions are good, your quality time will be used is less, and your quality time used is less. You will be more in your productivity, and the productivity is more with the same resources. Your ultimate cost will reduce. मतलब you have to work smartly, not hard working. हार्ड वर्किंग में क्या होता है, आप एक ही चीज को 10 बार करते हो, उसकी जगह आप एक बार करो, क्वालिटी वर्क करो. सो बेटर मेक बेटर बिजनेस डिसीजन एंड रिड्यूस कॉस्ट, एंड दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल only on the basis of purity in your data and quantity and quality of your data. Analyze customer trend satisfaction, which leads to new, better products and services. अगर आज की डेट में आपने
आपके डेटा को एनालाइज नहीं किया, व्हाट विल हैपन? रिसेंटली अभी चैट जीपीटी इज वर्टिकली ग्रोइंग अक्रॉस द ग्लोब। व्हाई? बिकॉज इतनी सारी चीजें उसमें डाल दी हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, खाली सब्जेक्ट मैटर पता है, आप सिर्फ सब्जेक्ट मैटर उसके सब्जेक्ट में डाल दो, आपको पूरा लेटर ड्राफ्ट करके दे देता है। व्हाट इज दैट? दैट वो कहां से आया? अगेन उसने भी कोई डेटा कलेक्ट किया था, कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसके ऑडियंस को क्या चाहिए उसके ऊपर सर्वेज हुए, एंड देन फाइनली इट हैज कम अक्रॉस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज ब्यूटीफुली वर्किंग। ओके, again they have also worked on data, so we are also going to work on data. Base is same, segments are different, उनका बहुत यूज स्केल पे, अभी हम बिगिनर्स हैं, हमारा इनिशियल स्टेज पर है, बट ट्रैक इज सेम। नाउ नेक्स्ट इज डेटा एनालिटिक्स इज ब्रोकन डाउन इनटू 4 basic steps. Which are they? How to do that? One is descriptive analytics, that is describe what has happened over a given period of time. Next is your diagnostic analytics, that focuses more on why something has happened. कभी हमारे घर में भी कुछ होता है तो हम उसके लिए सोचते हैं ना, उसका डायग्नोस करते हैं। अगर हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हाट ही डज अ डायग्नोस्टिक्स। Similarly, on our data, we do the diagnostic. Why this has happened? So, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ? Why this material can't fail? So we do reverse calculation and we'll find out why this has happened and this should not be repeated in future. वो सब चीजें कब होंगी? जब आपके पास सारा डेटा on hand है, and that too in certain formats. Predictive analytics moves to what is likely going to happen in the near term. ठीक है, उसमें आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो। एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, अ प्रोसेस दैट एनालाइजेस डेटा एंड प्रोवाइड इंस्टेंट रिकमेंडेशन सजेशंस ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रैक्टिस टू सूट मल्टीपल प्रेडिक्टेड आउटकम्स। ये सारी चीजें क्या है? वर्ड बाय वर्ड देखो तो हमारे लिए सब साइंटिफिक नाम है, बट ये सारी चीजें हम हर रोज हमारी पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, बट ये साइंटिफिकली उसको सेग्रीगेट किया गया है, उसको नाम दिया गया है। बाकी ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस पूरे सेशन में या पूरे एनालिटिक्स में जो हम नहीं करते हैं, अदरवाइज वी वुड नॉट सर्वाइव एट दिस एज। हम हर चीज का कर रहे हैं काम विदाउट नेम। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर टेक्निक्स enables a business to take raw data and uncover patterns to extract valuable insights. As a result, data analysis helps companies make informed decisions, create a more effective marketing strategy, improve customer experience, streamline operations, among many other things. ये सारी चीजें होती हैं only when you are clear with your objectives. If the objective is clear, then everything is possible. You can support your company, you can support yourself, you can support your nation. Now, what are the steps? How to do data analytics? First step is determine the data requirement or how the data is grouped. आपके पास data आ गया. Then data may be separated by age, by demographic, income or gender. Data values may be numerical or be divided by category. ये चीजें हम क्या हमारी लाइफ में नहीं करते हैं? सब कुछ करते हैं। स्कूल में हम जाते हैं, क्या होता है? We segregate who are less than 10 years age, who are less than 18 years age. Okay, उनके फादर की इनकम क्या है? What is their gender? On the basis of that, we divide the groups, and based on that, if there is a subsidy, we give subsidy whose father's income is less. क्या नहीं करते हम? सब कुछ करते हैं। Everything we are doing in our real life, but now this has taken a new, you can say, picture, new area where the competition comes into it. Now people have understood कि ये सब नहीं करेंगे तो हम बाजार में नहीं रह पाएंगे, and for that what they are doing, they are maintaining their data very efficiently, because to stand in the market, cutthroat competition है, 0% में profit में काम कर रही हैं कंपनियां, उसमें भी how to reduce the cost. They cannot increase the rate because competitor will take the business.
with the same rate, how you can maintain your cost by increasing your productivity, your using your resources in a proper fashion. With multi-skilling, you can reduce your overhead. Everything can be done. Second step, the process of collecting data. This can be done through a variety of sources through such as कंप्यूटर से ले सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज से ले सकते हो. जैसे अभी हम सपोज किसका गूगल फॉर्म हमारे पास आता है, हम भरते हैं कि how did you find the session, whether it is informative or it was okay or it was very interesting. भरते हैं, आपका फीडबैक फॉर्म जो बोला जाता है, what is that? That is data collection. Based on that data, even if you go into a mall, at the entrance itself, क्रेडिट कार्ड वाले बैठे होते हैं, HDFC वाले बैठे होते हैं. क्यों? उनको वो बिजनेस करना है. जियो वाले बैठे होते हैं अपने फॉर्म लेके. वो क्या करते हैं? आपका डेटा कलेक्ट करते हैं. आफ्टर व्हाट डू दे डू? दे गेट द करेक्ट डेटा इनटू देयर हैंड. देन दे सेल आउट दैट डेटा. वो डेटा भी बिकता है. उसके ऊपर से मास मेलिंग होता है. आपके पास हर रोज फोन आते हैं, बजाज फाइनेंस से आएगा, इससे आएगा, उससे आएगा. कैसे आ रहे हो सब? बिकॉज दे हैव दैट डेटा ऑन हैंड. कैमरास, एनवायरमेंटल रिसोर्स. अभी कैमरास की बात करो, जैसे आप किसी मॉल में जाते हो, वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर वो काउंटर को प्रेस कर रहा होता है, यह काउंटर ऊपर में काउंट कर रहा है हाउ मेनी पर्सन हैव एंटर्ड. फ्रॉम दैट व्हाट डू दे डू? डेटा एनालिसिस. दे डू कि किस पीरियड में कितने लोग एंटर होते हैं, विच इज द पीक पीरियड ऑफ द बिजनेस, विच इज द स्लैक पीरियड ऑफ द बिजनेस. ड्यूरिंग द स्लैक पीरियड सुबह के शो में आपका पिक्चर का टिकट कम हो जाता है, नाइट शो में पिक्चर का टिकट बढ़ जाता है. ऑन सैटरडे संडे एवरीबडी नोस इट्स द वीकेंड, दे डोंट गिव एनी कंसेशन. ऑन द ऑफ डे दे गिव द सजेशन. वो सब कहां से निकलता है? हाउ डू दे एनालाइज दैट थिंग? थ्रू डेटा एनालिटिक्स. दैट ऑल थिंग्स वी नो. Nothing is there that we don't know. Everything we know, but we don't take pain to understand, is this really required? And this now is coming on the picture, that it is really required. Third part, once the data is collected, it must be organized so it can be analyzed. अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं, उसको एनालाइज नहीं कर सकते आप. This may take place on a spreadsheet or some other form of software that can take statistical data. And finally, the fourth step is data is then cleaned up before analysis. How to clean that data? For cleaning up data, there are number of functions in Excel that you have to use it. You have to clean your data before you go for any data analysis. Otherwise, what will happen? A simple layman language example I am giving you. Suppose I write Bombay as a city name. Earlier it was Bombay, now it is Mumbai. Earlier it was Vadodara, now earlier it was Baroda, and now it is Vadodara. Okay, earlier it was Madras, now it is Chennai. The name has changed. If a person writes Bombay and the same another sales representative writes Mumbai, and if you do data analysis, what will happen? The two cities will be generated. Entire business is divided into two. You will not get the output what you are expecting that. So in that case, where to keep the constraints, where to keep the duplication entry should not take place, where the soundex entry should not take place. If you say Bombay, Mumbai, okay, so these two things are same. It's a duplicate entry. How to remove that? All those things, you have to create the masters for that and remove them. Then only you can say you have done the cleaning of your data. This means that it is scrubbed and checked to ensure there is no duplication or error and that it is not incomplete. Say for example, date. If you are asking for date of joining or date of birth, one person is sending you in DDMM format and another person is sending MMDDYY format. What will happen? And if it is 12/12/2022, which one is month and which one is year or which one is month, it is very difficult to make out. 12/12 दोनों 12 है, क्या day है क्या month है, we don't know. Similarly 6/2, which one is day, which one is month. ये सब जो छोटी-छोटी errors हैं, इसमें क्या होता है, आपका पूरा का पूरा period जो होता है, quarterly report, half yearly report, monthly report, everything gets disturbed. That is the part of your data cleaning. So everything is clean, then only it goes to the data analyst to be analyzed. ठीक है?
तो ये आपके ये 4 स्टेप्स हैं. These are most important steps to be followed when you go for data analysis. Next is to process data and extract information. There are different analysis methods are there. One is regression analysis. ये सारे जो वर्ड है ये आपके लिए शायद टाइम सीरीज के से बाकी सारे नवे वर्ड है. रिग्रेशन शायद सुना होगा जो स्टैटिस्टिक्स में होंगे, या टाइम सीरीज सुना होगा जो हम रोज रूटीन में यूज करते हैं. Monte Carlo, cohort analysis, factor analysis, these all are the major part of your data analytics, and that all things will be covered in your course when you will go for data analytics course. Okay, ये सब क्या होता है, ये अलग अलग मेथड्स हैं और हर एक की शीट होते हैं. उस शीट को कैसे एनालाइज किया जाता है, उसके फार्मूला सारे आने आपके लिए जरूरी नहीं है, but how to make them active in your Excel sheet and how to use them and what inferences you can get from these things is part of your course. So regression analysis क्या करता है, entails analyzing the relationship between dependent variables to determine how a change in one may affect the change in another. Say for example, अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं, किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा और किस चीज का सेल बढ़ेगा? नेचुरल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक. गर्मी है, गर्मी चलो आइसक्रीम खा लेते हैं. टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइसक्रीम का सेल बढ़ रहा है. टेम्परेचर घट रहा है, आइसक्रीम का सेल घट रहा है. दे आर बेस्ड ऑन वन टू अनदर. Factor analysis taking a large data set and shrinking it to a smaller data set. ये शायद हम हमारी इंडस्ट्रियल लाइफ पे यूज नहीं कर सकें, बट आप फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उनके पास तो लाखों डेटा है. वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग ये फैक्टर एनालिसिस डेटा का यूज करते हैं. कोहेरेंट एनालिसिस, ये भी योर डेटा सेपरेटिंग आउट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और उस ग्रुप के ऊपर आप एनालाइज करते हो सो दैट यू कैन वेरी वेल मेक आउट under which group something is going wrong or something is going right. वो सब coherent analysis में आता है. Monte Carlo is again a beautiful concept. Then time series. Time series में जितना ज्यादा डेटा आपके पास है उतना आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा. The relationship between the value of the data point and the occurrence of the data point. This is again a beautiful concept of your data analysis part in your data analytics course. ये पूरा एक ऑप्शन है आपके एक्सेल में. यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. ओके, दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स. देन पॉइंट कम्स इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स. अब डेटा एनालिटिक्स क्या है? इज अ ट्रेडिशनल और जेनरिक टाइप ऑफ एनालिटिक्स यूज्ड इन एंटरप्राइजेस टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन. वो सिर्फ यू कैन से इट्स अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट. आई से data analysis is a specialized type of data analytics used in business to evaluate data and gain insights. आगे का भी कुछ सोच सकते हैं. The first step in any data analysis process is to define your objective. If you are not defining any objective in your life also, then your life is also a dump. Without problem statement or defining without any objective, you cannot do anything. So every problem should have problem statement. In data analytics jargon, this is sometimes called as problem statement. Defining your objective means coming up with a hypothesis and figuring how to test it. कौन सी चीज के लिए कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सी एनालिसिस प्रोसेस पर जाना है, वो सारा आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी लगा दे कोई भी आउटपुट ले, ऐसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है. What is suitable to which type of data, that analysis you have to take care while doing any data analytics. Right? Now, how to learn and become a data analyst? Okay, ये क्या होता है अभी? Get a foundation education. Foundational education doesn't mean MCA, BCA, BE computer. No. You should know how to think logically. Build your technical skills. Technical skills भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई MCA वाला है वही डेटा एनालिटिक्स बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी थॉट प्रोसेस, आपका डेटा को देखने का अंदाज, देखने का तरीका, everything depends on that. And above all, your vision and thought process makes your technical skills strong. आज के जमाने में वो नहीं रहा कि आप
बी कर लिया तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनकर रह जाओगे, नहीं। बी मैकेनिकल करके आदमी एमबी करके ऐसे भी ईआरबी में घुस जाता है। Why? Because that is your interest area and where you can feel like that I can grow in this particular growth. Don't think if I am doing BCom, I will become MCom only. After BCom, there are so many options. After BA, there are so many options. So that is not like that कि आपने जिस फील्ड में हाथ रखा वही फील्ड में सारी जिंदगी निकलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। So you should have self confidence in yourself. Okay. Then work on project with real data. आप डमी डेटा कितना भी बना लो, आपको वो फील नहीं आएगी, बिकॉज डमी डेटा इज डमी। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन रियल डेटा, इवन इफ इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ 100 आइटम विल डू, बट 100 का एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो 1000 के लिए भी होगा, 10,000 के लिए भी होगा, 10 लाख के लिए भी होगा, बट यू शुड नो हाउ टू स्टार्ट विथ। डेवलप ए पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क एंड प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योर फाइंडिंग। गेट एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब। कहीं पर भी कोई भी जॉब जहाँ पे डेटा का काम हो रहा है, अगर आप वहां घुस गए, वहां से आपने आपकी शुरुआत कर ली, देन व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट सीक्वेंस के डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, आपके सीनियर के साथ बैठोगे, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे चल रही। कभी कभी ऐसा भी होगा, इफ यू हैव दैट एनालिटिकल स्किल, यू कैन गाइड योर बॉस ऑल्सो कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करो तो इससे ये बनेगा। Because in that there is no thumb rule. Do you think that if you are a automobile engineer and on the way if your car stucks up, you will open the car and start repairing it? No. But a 12th pass or 8th fail driver who is a mechanic in garage will solve your problem. That means the technical skills plays major role. Your education supports you to think beyond that particular person's thinking capacity, but technically he is sound than you because he will give you instant solution, but you will do the strategic decision. So you should go hand in hand, technical के साथ आपका professional qualification को use करो, professional qualification technically sound रहो. Sometimes what happens, we believe that I am senior manager, I am AGM or general manager, why should I learn Excel? If you won't learn Excel, you will always depending on the clerk who is BCom, and on his data you will be taking your strategic decisions. Don't do that. Data, let them prepare for data strategic decision. You do your own analysis and find out where the problems are. Then you can say you are fully skilled professional in the life. Now the question is Microsoft Excel a data analysis tool? हाँ, डेटा ही तो होता है इसमें। हाँ, तो जब आप सबको बताया। Yes. So Microsoft Excel allows you to clean and explore data as well as add advanced data analytics capabilities through data analysis tools like Power Query, Auto Filter, Power Pivot, Power Map, सब कुछ Excel के पार्ट। बट हम एक Excel को एक लेवल तक देखते हैं, अगर हम उसके डेप्थ में जाते हैं ये सब अंदर से ही निकलता है। एंड वी ऑल हैव ऑल दिस थिंग्स इन आवर लैपटॉप, इन आवर डेस्कटॉप, बट वी हैव टू dig it out everything. एक्सेल के डेटा टाइप्स वो आपको पता ही है, नंबर डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा होता है, लॉजिकल डेटा होता है, एररनेस डेटा होता है। ओके, वी आर प्लेइंग विद दिस डेटा एंड डू ऑल द थिंग्स व्हाट वी डू ऑन द डेली बेसिस। Microsoft Excel is a great tool for analyzing data. It's especially handy for making data analysis available to the average person at your organization. आप इसके सिवा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके लिए एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये सीखना, बट एक्सेल एक ऐसी चीज है हर घर में बैठी है, हर घर में एक्सेल है, हर बंदे के पास एक्सेल है, हर कंप्यूटर में एक्सेल है। विदाउट दैट यू कैन नॉट मूव अराउंड। सो दिस इज द बेस्ट टूल टू स्टार्ट विथ, and later on once you are perfect in this you can extend yourself on the need basis, but this is you can say basic need, necessity है। जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, उसके संग में लगा दो एक्सेल, उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती। so everything you can do at one level using your data analysis, and if you are comfortable with Excel you can switch on to Google Sheets also. They are hand in hand.
दोनों का यूज कर सकते हैं आप एक साथ. यू कैन गो विथ पावर BI ऑल्सो. So there are multiple resources you can use with the same database. क्या मुझे नहीं पता था सर. Now, Microsoft Excel is one of the most common software used for data analysis. अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा कि हम ये सारी चीजों का यूज करके किस तरीके से डैशबोर्ड भी बना सकते हैं. सपोज आपके पास ये डेटा है कोई, ठीक है, दिस इज योर बेस डेटा. ओके, दिस इज योर बेस डेटा. आपके पास भी ऐसा ही कोई डेटा होगा कि मंथ होंगे जिसमें डेट होंगी, रीजन होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, क्वांटिटी होगी, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा. बट यू आर प्लेइंग विद दिस डेटा ओनली. नाउ हाउ टू हैंडल दिस डेटा एंड हाउ टू मेक इट इंफॉर्मेटिव. अब ये पूरा डेटा किसी को दोगे, व्हाट विल हैपन? नोबडी विल सी योर सच अ बिग डेटा ऑफ 15 लाख रिकॉर्ड. देन व्हाट टू डू? यू हैव टू पुट इट इनटू सम विजुअल मेथड, ग्राफिकल मेथड. जब तक ये ग्राफिकल मेथड में नहीं आता या टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आता, एज पर योर रिक्वायरमेंट, इट हैज नो मीनिंग, जस्ट अ डेटा कलेक्शन. It's a good data collection, but you cannot do any inference or you can do any analysis on this data. For that, what you need to have some output. Which type of output? अगर हम ये पूरे के पूरे डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं and we put it into this format. अब वो वही डेटा है जो आपको इस फॉर्मेट में दिख रहा है और पूरे 15,500 रिकॉर्ड का समराइज फॉर्म में दिख रहा है. ओके, दिस इज योर डेटा. नाउ on this, if your management or if yourself want to do any analysis or you want to do the comparison of anything, you can very well make it. यहाँ पर मैंने 4-5 वो लिए हैं पैरामीटर्स. ओके, सपोज यहाँ पर मेरे पास 2 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है और उसके साथ ही मेरे पास ये कुछ 4 प्रोडक्ट्स हैं. रिटेल सेल है, होलसेल सेल है, मंथ वाइज का सेल है एंड द रीजन्स है. अब इसके अंदर मुझे कुछ भी देखना है. एज ऑफ दिस मोमेंट आई हैव फुल डेटा इन फ्रंट ऑफ मी. इफ आई से आई वांट टू सी द डेटा ऑफ ओनली 18-19 फाइनेंशियल ईयर, आई विल क्लिक ऑन दैट. सो व्हाट विल हैपन? आई विल गेट द डेटा ऑफ 18-19. ओके, दिस इज द डेटा ऑफ 18-19. एंड इन दिस इफ आई से आई वांट ओनली ऑफ प्रोडक्ट 1, एक ही प्रोडक्ट का मुझे डेटा देखना है, तो मेरा एक प्रोडक्ट का डेटा है. अगर मुझे प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 4 का मिलाकर देखना है तो मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ. आई विल गेट डेटा ऑफ प्रोडक्ट 1 and 4. माय डेटा गेट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड व्हेन माय बेस डेटा गेट्स अपडेटेड. बेस डेटा में मेरा कुछ भी एंट्री होगा, ऑटोमेटिकली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनटू माय डैशबोर्ड. इफ आई से आई वांट टू सी ओनली द टाइप ऑफ सेल, दैट इज रिटेल सेल का डेटा देखना है मुझे, so I will get only the retail sale. And in that, if I want both, I can click on this. So I will get both. And in that also, if I want to see only for region 1, I will get data of only region 1. And now I want to compare with region 1 and region 4, I can compare that also. Okay? तो ये सब चीजें कब हो सकती है? जब आपके पास डेटा प्योर है. Then only you can do any analysis कि किस रीजन में क्या सेल हो रहा है, किस महीने में कितना सेल हो रहा है, किस रीजन में कितना सेल्स हो रहा है. एंड विद दिस डेटा, इसके आगे अगर आपको जाना है, यू कैन गो फॉर डेटा फॉरकास्टिंग, दैट इज प्रेडिक्शन, कि इतना यहाँ तक हुआ है, आगे के महीनों में और कितना हो सकता है. दैट ऑल्सो यू कैन वर्क आउट यूजिंग योर डेटा फोरकास्टिंग. मीन्स व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें आपके पास क्या आता है? गोल सीक आता है, सॉल्वर आता है, देन डेटा मैनेजर आता है, सिनेरियो मैनेजर आता है, डेटा एनालिसिस आता है. वो सारे के सारे पैरामीटर्स यू कैन मेक यूज इनटू योर डेटा एंड मेक योर एंटायर शीट वर्केबल एंड यू कैन से इंफॉर्मेटिव. अब यहाँ पे सपोज जनवरी है, मैं सिर्फ जनवरी का डेटा देखना चाहता हूँ, मैं जस्ट जनवरी क्लिक करूंगा. I want to see data of only 1 month. I can see only 1 month data. Everything is visual. And it is very easy to understand those 15,500 records in one screen.
And similarly, you can make any number of charts and put it on the dashboard. And the moment you click it, the table also gets updated. यहाँ का भी और यहाँ का भी दोनों tables भी update हो रहे हैं. It means क्या हुआ? Every chart, every table is getting connected with each other, and you can very well do analysis on that. Okay, so this is the way how you can proceed further and do the needful. Now, इसी टाइप का आप कोई भी डेटा लीजिए. Not only this, you can take any data. You can generate your any data of your interest. जैसे मैंने एक डेटा और जनरेट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. This is second set of data. Okay, this is second set of data. अब ये suppose ये है. This is my data which I have collected. Collected means मैंने खुद ने जनरेट किया है. ठीक है, ये जनरेट करने के बाद ये रिलेटेड होता है इंश्योरेंस कंपनी का. अब इंश्योरेंस कंपनी रिलेटेड मैंने ये पूरा डेटा बनाया. नाउ हियर व्हाट आई हैव केप्ट द डेटा वैलिडेशन. व्हाई? बिकॉज आई वांट प्योर डेटा टू बी फीडेड इनटू माय एक्सेल शीट. एंड दिस टाइप ऑफ वैलिडेशन यू हैव टू कीप इन योर प्रोग्राम आल्सो इफ यू आर यूजिंग एनी लैंग्वेज. फंडामेंटल्स आर गोइंग टू रिमेन सेम. अब यहाँ पर जो आप वैलिडेशन रख रहे हो वो कैसा रख रहे हो? ये 3 आ रहे हैं यहाँ पर कि ये 3 में से एक ही एंट्री होनी चाहिए. नाउ हाउ टू get this type of data in the master, from where you are going to control it. So, जो आपने बोला था segregation of your data, this is the segregation of your data. You can make different masters for different things, and all these always make it into a table format. Don't put it in normal data range. This is the table format. Once you convert your normal data range to table format, what will happen? Anything you add in, automatically it will get reflected into your Excel sheet. Otherwise, you have to change the ranges. So that is the basic fundamental of making use of Excel sheet in the table data range, not in the normal data range. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ सेग्रीगेट कर दी. उसके ऊपर से यहाँ पे हमने इनको वैलिडेशन में यूज किया. ठीक है, यहाँ पे हमने वैलिडेशन में इनको यूज किया everywhere. So nothing will come up other than what we have written there. Then on the basis of that, we are making some tables. ये हमने जो टेबल बनाया. अब डेटा अगर हमारे पास ये वाला होता, it is very difficult to understand what it says. अगर मैं उसका अलग अलग ग्रुपिज्म कर दिया कि ये मेरे व्हीकल टाइप्स है और ये उनका पॉलिसी स्टेटस है, उसमें कितने लोग हैं जिसका स्टेटस रिवाइवल में पड़ा है, रिन्यूअल में पड़ा है. And that thing also, if I say how many are underage वाले ग्रुप का क्या स्टेटस है, तो ये स्टेटस है. अगर मैं बोलूँ सीनियर सिटीजन का स्टेटस क्या है, तो सीनियर सिटीजन का स्टेटस ये आएगा. इफ आई से ओनली फीमेल्स के डेटा में मुझे देखना है, तो दिस इज द फीमेल स्टेटस. आई वांट अदर्स का खाली अदर्स में आएगा. So anything you want to realize or you want to analyze, you can just click on the things what you want, and it will put into the graphical mode. Same thing you can go for genders. Same thing you can go for claim amounts. ये claim amounts क्या है? किस के कितने claim amounts आते हैं? सब यहाँ मैंने others को हटा दिया. ये आ गया पूरा. Now इसके अंदर मुझे क्या करना है कि 18 से 25 एज का क्या claim amount है? किस व्हीकल के, किस टाइप के व्हीकल के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ क्लेम अमाउंट आ रहा है? एवरीथिंग आई कैन गेट इट फ्रॉम दैट. If I want to see about accidents, this is related to the accidents. In which year, how many accidents took place? वो हम यहाँ से ले सकते हैं. आप ईयर सिलेक्ट कर लो. ठीक है, अगर ईयर के अंदर आपको कोई मंथ्स पे जाना है, आप मंथ्स पे क्लिक कर लो. So within that year, you will get the months. If I want to see only the month of February, I can click on February, so I will get the data of only February. And in that also, if you want to go more in detail up to the days level, you can go in the days level. तो भाई फरवरी पहली को कितने एक्सीडेंट हुए थे? This is the ratio. 1 से 3 तारीख में कितने हुए थे? You can go with that also. So these all things are mainly used in your analysis. So that on the basis of this, you can take another decisions also. You can take the decisions also. If I say it is for all, मैंने डिलीट कर दिया फिल्टर को, मेरा पूरे के पूरे डेटा का आउटपुट. Okay, so this is called your data analytics. Now
you can go for the prediction by using what all regression method, Monte Carlo method जो हमने देखे, वो सबका भी यूज करके आप इसके आगे और एक्सटेंड कर सकते हो. That is entire thing makes your data analytics course. So with this, I would like to end the webinar of my side, and I give this charge to Nidhi back. And if you have any queries, you can put it into the chat box. I'll see if there is any queries coming from your end. Yes, Nidhi, you can take care. Thank you for all. Thank you. Thank you so much, Manoj sir, for your valuable insights into data analytics. Now, data that has been provided by you will help me and my participants to analyze that there is so much in MS Excel that we still need to learn. Now, my participants, dear participants, I would request all of you to kindly give your feedback. Kindly spare 5 minutes and fill the feedback form. The link is provided in the chat box. You can share your interest to enroll the course in the WhatsApp group also, and you may also write to us in the email ID that has been given in the chat box. Once again, thank you, Manoj sir. Thank you. It was a very valuable session for all of us. Thank you. I hope any query from the participants? Any queries? Sir, there is one query in the chat box, how to make this dashboard? Yeah, for that, as you have your data with you, okay, that data you can put it into the pivot table, and from pivot table, you make the pivot chart, and all the pivot chart with their slicers, which I am selecting for the year, for the month, or for the day, that are the slicers. And those pivot charts along with your slicer, you put it on some separate sheet and name it as dashboard and put it into the reasonably good size so that on one screen you will have multiple charts on the same screen and that arrangement is again depending on your initiative. How good you are arranging the things in a systematic way. That comes only by practice. Once you start making it, start with only 2 charts, then introduce third, then introduce fourth, and see how good it looks on the chart. And in summarized form, don't say that 100 months data you are taking on one chart, nothing will be visible. When you are doing analysis, you are pinpointing what is the strength and what is the weaknesses. वो आप उसमें से trace out करना चाहते हो. So your data should be very clearly specified by, and your objective should be very clear what you are want to see into it. Okay. And if you are clear in your objective, you can very well select what you want. Only select those parameters in which you are interested. Then you will get such type of record. Okay, thank you so much, sir. Anyone else having any queries? Please feel free to write in the chat box for any further queries. Sir, I think our participants are also still in dilemma. There is so much to learn in MS Excel. It's an ocean. Excel is an ocean. You cannot say you know Excel. There are hundreds of functions, hundreds of formulas, so many things, and that too with interrelation. Yes, yes. So only one tool can be used in multiple ways. So there is no end line. Keep on learning, there is no end line. Yes, yes, definitely, sir. And for this only, SkillsRediscovery has come up with this course of data analytics using MS Excel. So it's an 8 days program, 2 hours each, starting from 14th of May to 21st of May. 8-day program, 2 hours each means only 16 hours you need to devote to learn so many things. So anyone who is interested in enrolling the course may write to us in the WhatsApp group, or you may write to us in the email ID mentioned in the chat box. No more queries? I would again request the participants to fill the feedback form that will help us to improve upon in the future also. The link for the feedback form is shared in the chat box.
So I'm repeating again. It's an 8-day program, 2 hours each, evening program 7 to 9, starting from 14th May to 21st of May. For any further queries, write to us on the email ID, or you may directly inquire in the WhatsApp group. You may write to us at info@skilldiscovery.com. Any queries, anyone regarding the course or the topic? Sir is here to solve all the queries. For registration, you can inquire in the chat, in the WhatsApp group, and you may write to info@skilldiscovery.com. You will get the details in the reply mail. Yes, it's a certified course. You may share your contact details here also, or you may write in the WhatsApp group to get the registration details for the course. Thank you so much, everyone. Kindly fill the feedback form before leaving.